Festivals was such joy for us when we were kids because our mothers were slaving away in the kitchen. अपना घर पराया घर में औरतों की तो independence है ही नहीं. If there were no men who would protect you, and she's like, protect me from whom? राखी बांधने से औरत वीक है और आदमी कुछ भी कर सकते हैं, तो वो भी हट जाएगा ना. फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है और किसी को भी किसी से प्रोटेक्ट करने की जरूरत हो सकती है. आदमी लोग या तो रक्षक होते हैं या राक्षस होते हैं. वैसे फैमिली स्ट्रक्चर्स नहीं रहे जैसे पहले थे. तो आप एक दूसरे के लिए खड़े रहें और वो आई थिंक एक बेटर मच डिफाइंड रिक्लेम्ड राखी होगी. हाउ डज और डजंट वन सेलिब्रेट रक्षा बंधन? I'm Tara Kaushal, feminist counselor and author. Hi, this is Siddhaarth Aalambayan. I host the Male Feminist and the Bombay Journey, and this is RelationShifft, जहाँ हम लोग सेक्स, लव, डेटिंग और लस्ट से लेके कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसे डे एंड एज में हम रहने लग गए हैं तारा, जहाँ पर आई थिंक इंडिया इम्प्रूव हो रहा है और हम इवॉल्व हो रहे हैं. We are doing this so that we help things evolve further. Yes. Improve. Anyway, today we're talking about rituals and festivals. जो patriarchal rituals and festivals जो हम feminist lens से view करेंगे, and how does or doesn't one celebrate रक्षा बंधन? यार देखिए, राखी की सबसे पहली मेमोरी के बारे में बात करूं तो हमें एक तरीके से सिखाया जाता है ना कि आपको ये चीज करनी है. आपकी राखी, अगर आप दूर रहते हो तो आई हैं बहनों से, और फिर आपको टाई करनी है और आपको उनको प्रोटेक्ट करना है. ओनली वेरी लेट इन लाइफ डिड आई रियलाइज कि उन्हें मेरी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत. हाँ, मतलब there's this meme that went viral recently which said, men asked me if there were no men who would protect you, and she's like, protect me from whom? ये जो प्रोटेक्शनिज्म है, ये जिसे प्रोटेक्शनिज्म हम कहते हैं, ये पेट्रियार्की का हिस्सा है. और it gives men this whole, the idea that women are their possessions and need protection from other men. And जो भी बहुत patriarchal stretches हैं country में, जहाँ पे मैं गई थी when I was researching Why Men Rape, my previous book, वहां पे ये भाई दूज, रक्षाबंधन, all of these protection festivals are very big because women need protection from other men that are doing all sorts of stuff to them. There are lots of festivals and rituals all over the world, and religion in general is patriarchal. It's by men and for men. But some festivals and rituals are more patriarchal than others. And Raksha Bandhan, जैसे कन्यादान भी है, these are some that are really severely patriarchal. And there's also Diwali. या वो मतलब एंडलेस लिस्ट है, जहाँ करवा चौथ के बारे में हम एक और एपिसोड में आपसे बात करेंगे. तो कन्यादान, जैसे आपने बोला ना, कन्या को दान क्यों करना है? वो तो इंडिविजुअल है, उनका एक अपना वजूद है. गाय की तरह ना, पोजेशन. मतलब यहाँ से वहां उसको भेंट दो, अब वो किसी और की प्रॉब्लम हो गई है, अपने घर जा रही है. नहीं, पराए घर तारा. No, but I also know somebody whose parents would not let her even make a cup of tea in the house. कि अपने घर में बनाना. The women were very possessive of the kitchen space, and जो भी करना है तुम अपने घर में करो, यहाँ कुछ मत करो. So अपना घर पराया घर, औरतों की तो इंडिपेंडेंस है ही नहीं. ऐसा क्यों है? इससे पहले हम लोगों को बहुत जरूरी ये बता देना चाहिए लोगों को कि हमारे रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, ताकि जो भी आ रहे हैं कमेंट्स में हमसे बात करने, वो अवेयर रहें कि वेयर वी कम फ्रॉम एंड व्हाट इज आवर आइडियोलॉजी. आप बताओ. I'll tell you. Mine is interesting. What's yours? मेरा आई एम स्पिरिचुअल इन अ मैनर कि मैं बिलीव करता हूँ कि कोई वर्ल्डली एनर्जीज हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं
थोड़ा साइंस भी है उसके अंदर की ग्रेविटी, यू प्रॉब्ली हैव अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ योरसेल्फ, मैग्नेटिक पुल, ला ला ला, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन अफेक्ट यू. मेरा ऐसा कुछ किसी एक डेटी में या किसी बॉडी में बिलीफ नहीं है पर से. लेकिन हाँ, मैं जब डरता हूँ तो एक आध बार मैं हनुमान चालीसा गा देता हूँ क्योंकि मुझे इतनी जोर से सिखाई थी. एंड एज म्यूजिक आई रियली लाइक कौशल्या सुप्रभातम इन द मॉर्निंग बिकॉज साउथ इंडिया upbringing gives you that, it's a nice ring to it. I really like it. आपका? My mother was Catholic, Roman Catholic. My father was Punjabi Hindu. And I grew up with a house where sab kuch, we'd celebrate everything, but no one was particularly religious. But very early on, but at that point only I was questioning ki God kyun hai, what is God, how do we know it exists, why is it always a he? So I think the early feminism really impacted the way I saw religion and all of that. So now I consider myself an apathetic agnostic. Hoga koi shayad, mujhe nahi pata, but I also have a don't know, don't care kind of attitude to God. So that's why the apathetic. आपकी बढ़िया है. मैं भी वही हूँ जो आपने बोला अभी. I also am little of that. Little of what? जो आपने apathetic agnostic, जैसे नास्तिक is atheist, but आप नास्तिक नहीं हो. और क्योंकि मतलब Sid, I think saying definitively that we know that there is no spiritual being is also wrong. Yeah. How do we know? But I am not invested in studying all the world's religions to finding the answer. Fair enough. आपने जिम्मा नहीं ले रखा दुनिया का, मतलब वो आपको फिगर आउट करके इसका एक्सपर्टीज लानी है. जैसे कि मेरी जिंदगी में रीमा माय वाइफ आने के बाद मुझे पता चला कि वो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होता है. मुझे राखी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मुझे ऐसे फन डे लगता था. कई सारे खत आते थे, फन इंटरेस्टिंग लेटर्स फ्रॉम दीदीज एंड सिस्टर्स, एंड दैट वाज द टाइम वी वर राइटिंग टू ईच अदर, सो वी वर बीइंग इन टच बिकॉज ऑफ दिस. एंड व्हेन रीमा केम इनटू माय लाइफ आई रियलाइज्ड, अच्छा ऐसे औरतें ऐसा सोचती हैं, उनके लिए क्यों पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन वाला वो आता है फंडा. उनको जरूरत है नहीं है, क्या वो अपने आप को नहीं संभाल सकती. सो वहां से अगर आगे बढ़े तो आई थिंक व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम आपको जनरली रिचुअल्स पे क्वेश्चन हुआ और फिर आपने कैसे कम्युनिकेट किया उसको? So I was openly talking about, I remember having a conversation with someone when I was 12 saying, I don't know if God exists. It sounds really strange. And as I said, like, why are we not allowed to enter temples when we're menstruating? So for me, a lot of the questions came from a feminist lens. Like, this is not the life I want, and why is this? And it doesn't sound right to me, right? But when I started speaking about it, my parents did not in particular have a problem with it. Same. Like, they were pretty liberal. They've always been very liberal. So they were like, okay. And anyway, I use this in quotes, but I was a problem child, right? So this was one of my utpatang, like, acha, now she's even questioning God and ye nahi karegi and wo nahi karegi. So I didn't have too much of a problem, but I do know, and I speak to a lot of women who find that negotiating their families with their feminist journeys is the hardest thing. Family is, I mean, some random person having an opinion about your life doesn't really have much effect on it. लेकिन घर वाले करें तो ostracize you. Yeah. हाँ? लेकिन घर वाले करें तो आपको ज्यादा हर्ट If your होता है. family is ostracizing but they don't support you, then it's a problem. बेसिकली जो हमारा मुद्दा है रिलेशनशिप का, ये ना करने से आपके रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ा. द वे यू लव्ड योर सिबलिंग्स और ब्रदर और एनीबडी कजिन्स, इट डजंट चेंज. अगर आप रिचुअल्स को पूर्णता फॉलो करें ना करें, उससे कुछ ज्यादा अंतर नहीं आता है. एंड अभी तो हम करवा चौथ तक नहीं पहुंचे हैं, जो एक पूरा अलग टॉपिक है. तो उसके लिए तो हाँ जी, हाँ वो भी है. तो राखी पे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स आपके यहाँ दिनचर्या क्या होती थी? व्हाट वाज द काइंड ऑफ नैरेटिव यू गॉट? It's the narrative we've all grown up with. We need to be protected by someone and by some kinds of men.
and we need to be afraid of some kinds of men. तो आदमी लोग या तो रक्षक होते हैं या राक्षस होते हैं. This is not entirely true. You don't need to be related या मुंह बोला भाई या family to treat someone well or to be safe around them. I think one of the things, if we're talking about how to reclaim Raksha Bandhan, and I do think there are some festivals that can be reclaimed, and others like Karwa Chauth that I believe cannot be reclaimed. But if we do want to reclaim Raksha Bandhan, then we need to start with saying this also, that for those who need to hear it, and I know a lot of people do because we're questioning loyalties to family and toxic behavior and, stuff like that. Friends are the family you choose. So, you can also choose to celebrate with your friends, to celebrate in a gender neutral manner, to celebrate mutually. Like my bestie, who's male, started tying me Rakhi many years ago. Just because, मेरे ख्याल से ये भी रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए हमें कि राखी बांधने से औरत वीक है और आदमी कुछ भी कर सकते हैं, तो वो भी हट जाएगा ना. फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है और किसी को भी किसी से प्रोटेक्ट करने की जरूरत हो सकती है. तो आप एक दूसरे के लिए खड़े रहें, और वो आई थिंक एक बेटर, मच डिफाइंड, रिक्लेम्ड राखी होगी. हाँ, मतलब absolutely, and I think we should find a way to make this festival gender neutral. As I said, there are some that I do not think can be reclaimed. Yeah. But because there are many ways to defy the patriarchal rituals, right? And one of them is, of course, saying, I will not celebrate, or to speak out about it. Rakhi has a good idea on some fronts that really I do believe people need to protect and take care of one another in this crazy world that we're living in. But I don't see why protection only need involve physical strength or male strength and male violence and the fear of it and life surrounding it. I mean, neither in a genderless knowledge economy where everyone is earning and we're trying to get rid of gender violence, what do women need protection from? The more we start making neutral festivals, the better the world will be. I think how you can do it is, and अगर कोई हमारे को सुन रहा है और देख रहा है तो वो याद रखें कि you can refuse to participate. आप ये देख सकते हो कि कैसे आप अपना तर्क रख सकते हो लोगों के सामने. कठिन है, like you said, it is difficult, and millennials and Gen Zs have that fight with their families. इससे आप उन्हें कम प्यार नहीं कर रहे हो, इससे आप उनको डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हो, उनकी बात मान रहे हो, बट अपना तर्क भी रख रहे हो. एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी पुट आवर पर्सपेक्टिव एंड वी हैव अ इक्वल स्पेस, जो कि बहुत जरूरी है सिड, बिकॉज वैसे फैमिली स्ट्रक्चर्स नहीं रहे जैसे पहले थे. And we're so far away from families. Your neighbors become your family. Your friends become your families in cities. So I do think we need this commitment to one another. Yeah. You're the family I choose, and you can literally bind your friends, like band ke bol sakte ho ki, now we're family. But some sort of elevated friendship day. 100%. वही तो, राखी नो जेंडर, हैशटैग राखी नो जेंडर, ये मुहिम हम रख रहे हैं. राखी क्यों नहीं? तो अगर हम लोग इसी बहाने एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि हम उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज या सोशल मीडिया टिकटॉक पे देख के उनको वो कर पा रहे हैं, वी ऑलमोस्ट थिंक कि हम जानते हैं एक दूसरे की जिंदगी के बारे में. विथ राखी नो जेंडर यू मे जस्ट बी एबल टू गेट इन टच, लाइक द राइटिंग बिट दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट राखी. Write to each other, check in on each other, and you improve communication for everybody. So sahi hai. Why not? That's a great idea. And I think it's a 21st century reinvention of where we should be, where we are. Yeah. And I think it's very important. And I think if you put that out in the world, kahin na kahin we'll be able to spread this change across. And if enough people are ready to reinvent festivals, then we are looking at a better society also, and leading to egalitarian love, because then equality is what we're promoting. Yeah, and just a general thing, whatever festivals you do celebrate or don't celebrate, I
feel the need to remind our male audience that share the load. Festivals was such joy for us when we were kids because our mothers were slaving away in the kitchen. सही बात है. And we need to acknowledge what that means and yeah, share the load. या नो बिकॉज रिचुअल्स में भी जब हम बात करते हैं तो मुझे सिर्फ ये याद है कि मेरी माँ ही मंदिर में जाती थी, वो अपनी किताब पढ़ती थी और फिर वो कहानी सुनाती थी. या आप यही सुनोगे कि कांग्रीगेशन 5 औरतों का हो रहा है और फिर वो बैठ रही हैं. या जैसे आपने बोला किचन में सारी महिलाएं गई हुई हैं और वो कर रही हैं कुछ. इसकी कोई जरूरत थोड़ी ना है. यू कैन जस्ट बी, everybody could be in the kitchen, everybody could be serving, everybody is enjoying. And before we end, gifting is still okay. We can still gift. अच्छा, तो मैं एंटी कैपिटलिस्ट भी हूँ, तो ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछो, पर आई डू थिंक गिफ्ट्स आर वेरी दिल से एंड दे कैन बी वेरी लविंग एंड thoughtful, and they don't need to subscribe to capitalistic models of मतलब ये इतने value का. It can just be time together. It can be something small. So yeah, why not? Why take away all joys? Feminism वैसे भी सारे life के joys खा लेता है. हाँ जी. लेती है. Geez, this Hindi is very gendered. You know that as a language. Hindi is. It is. हाँ. It is ना. हमारे पास बहुत स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली definitive चीजें हैं. हाँ, तो मैंने अभी फेमिनिज्म को भी पुल्लिंग में बोला है. That's ridiculous. That's very bad. But anyway, so feminism steals all our joys in any case. मतलब जो फेस्टिवल्स अच्छी भी लगती थी, फिर मिसोजिनिस्ट गॉड के बारे में सोचना पड़ रहा है. खाना अच्छा लगता था, now you're like, oh my god, what is the unpaid labor of my mother's labor in the kitchen? All of these things. या हेल्थ इन पूड़ी एंड हलवा, हेल्थ का क्या रिलेशन है वो भी आ जाता है दिमाग में सडनली. तो कई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्या कर सकते. तो ये सब सोचना पड़ता है. सो आई थिंक या गिफ्टिंग इज डेफिनेटली ऑन. यस, सेलिब्रेटिंग. So Rakhi, no gender, festivals, no gender. Sid, I think we've left our audience with some very interesting points today. Yeah. This episode has been as thought-provoking for you as it has been for us as well. सुपर. देखो, आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट हर जगह मिल सकते हैं. स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट. इनफैक्ट इफ यू वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब देन यू probably looking at the video bit. I think Spotify also has our video. Essentially, look at your favorite podcasting apps. आप जहाँ पर भी हो, हमने सब जगह अपलोड कर रखा है. कमेंट्स में हमें बताना कैसा लगा आपको. कोई क्वेश्चंस हैं तो बताओ, we'll take them up next time. I think करवा चौथ डेफिनेटली तारा एक और एपिसोड बनता है. क्यों? Absolutely. Just before Karwa Chauth, we'll drop that episode, but keep watching. We have lots for you. This is RelationShifft. Siddhaarth Aalambayan signing off. Bye. This is Tara Kaushal.